अच्छे सोर्स आ गया। After this, so I walked on that side. I walked. Sir, आप सर प्लीज थोड़ा पीछे हो जाओ सारे। कैमरा तो ले जाओ। एक सेकंड। एक मिनट के चक्कर में दीदी अपना माइक बंद। वो थोड़ा हाँ ग्लिच आ रहा है। हाँ वही उसके बाद मुझे एग्जैक्ट आई नो बिकॉज़ यू रैन इट सो दे ऑपरेट ऑन योर फोन। दो बड़े बड़े स्टूल किया ना खाली
Something I wanted to ask you, sir. Commercial operation of the airport will start from July. Diplomat and routes, can you see that this is going to be the main phase part of the country? And latest being of the best, which is more stable. With Carlos and Aniki, with his number for the Chaya, what you need here from under এবার কথা বলতে এই যে আরেকজন দাঁড়িয়ে আছে এখানে मशीन दिखाएगा
पे जाएगा सीधा तक, वो इंटरनेशनल है लास्ट वाला। ओके, ये एक सेकंड। देखा मत जाएगा।
बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम भोगापुरम एयरपोर्ट पे, क्या कहना चाहेंगे इस एयरपोर्ट की स्पेशलिटी पे? एयरपोर्ट की स्पेशलिटी यही है, इसको पूरा ईस्ट का टेक केयर करता है। एयरपोर्ट पूरा विशाखापट्टनम का नहीं है, श्रीकाकुलम विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट अभी रायपुर तक जा सकता है, इधर से बरहमपुर तक जाता है। होल पूरा आदमी के लिए पूरा दिस एयरपोर्ट बहुत अच्छा बनाता है। एयरपोर्ट है ना 6 मिलियन कैपेसिटी हम लोग बना रहे हैं फेज 1 में। इसको 3.8 किलोमीटर आप देख रहे हैं वो रनवे, आपको इससे कम से 10 से 12 एयरक्राफ्ट लैंड कर सकता है, टेक ऑफ कर सकता है। तो इससे बहुत सुविधा मिलेगा। इसके अलावा हमारा 18 पार्किंग बेस है, तो इसके वजह से एयरक्राफ्ट बहुत अच्छा लैंड कर सकता है, वेट कर सकता है, ये टेक ऑफ कर सकता है। इससे हम लोग ये लोगों को सुविधा मिलता है, ज्यादा डेस्टिनेशन को कनेक्ट करने का संभावना है। सर, हमने एयरपोर्ट अंदर से भी देखा, इट्स समवेयर कि यहाँ पर कल्चर है सारा आंध्र प्रदेश का, तो क्या हम इसे आंध्र प्रदेश का मिनी म्यूजियम कह सकते हैं? हम जो कुछ कर सकता है, हमारा ये हमेशा ये ख्वाहिश आता है लोकल का आर्ट वर्क लेके आना है, हमेशा ये हमारा ऑलवेज उम्मीद है। सो हम इससे क्या करते हैं, हम लोग लोकल का टच कैसे मिलाएंगे, इससे एयरपोर्ट इज सेम, फंक्शन रिमेन सेम, वेदर इधर इंडिया में अब्रॉड में किधर भी सेम है। डिफरेंस क्या होता है, ओनली लोकल का टच मिले तो आपको अपना बनाता है। हम लोग ये ऐसा कोशिश है हमेशा, कैसा भी एयरपोर्ट बनाओ उसको लोकल का टेस्ट से बनाए तो उसका पैशन मिलेगा। और गोवा ऐसा बनाया, हैदराबाद, दिल्ली, ऑलवेज हमेशा हम लोग लोकल टेस्ट लेकर, वो भोगापुर में आंध्रा का टच मिलता है। सर, एक आखिरी सवाल, हम रनवे पे है, अभी हमने एयरपोर्ट देखा है, लेकिन अभी हम एक्साइटेड है कि इनॉग्रेशन कब होगा। प्लीज अगर आप थोड़ा डेट की किन दे देते। डेट का आपको मालूम है, हम लोग हमेशा एग्री किया ऑनरेबल सीएम के साथ, जून एंड का हम रेडी करेंगे, जुलाई 1 से कमर्शियल ऑपरेशन करने के लिए हम तैयार हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। Such a wonderful airport it is. I would like to know what the speciality of this airport from. Yeah, this airport has one of the key thing is design. Design is actually taken from the flying fish. The roof has come from the flying fish. That's one thing it has been. The second thing is the airport is designed such a high standards. What is the high standard? For example, you know that this area prone for cyclones. So we designed that whole airport especially for the wind load of 275 kilometers per hour. That's one of the key things. I think no airport in India happened to that level. Generally, we do 150, 160 kilometers per hour. Secondly, we also taken this intense rain, which is about 270 mm rain, which also taken care for this roof as well as the entire area will be drained out faster. There's a big challenge for to make this. So these two things happen. And another important point is when you do the building, we also do that smartness. So this airport comes with a smart airport. Means basically one is like any other airport, we have a touch machines, we have a self baggage drops. You can see that today in my check-in area, 22 are conventional machines, conventional setups, counters, and 18 are self baggage drop. That gives you enough people have use technical people comfortable come and expand faster, check in faster. Coming to that other thing, we also have the washroom. We want to smart washrooms so that we can able to see that entire cleanliness, everything. No need to feedback for the passengers. We come to know much before we can able to react to that. And similarly, the entire building management system such a way that artificial intelligence point of view, we have an APOC system is there where we can get all the data of the entire system and we also predict how the passengers flow will be there, what will be done, so that also the part of the whole system. Apart from that, we also use the cameras for getting the trolleys. So that we know how many trolleys available at what place, we can be able to monitor centrally and be able to give to them. These are the things, one of the key things. So this airport is come with a cute as a smart airport, it gives you everything. So we have been to Delhi airport, we have been to Goa, so how different it is? No, different. Every airport has own different. Basically, one is first thing is depending on local conditions, depending on the weather conditions, design will change. Number two, every airport has own style of local touch. Here in this airport is the local flavor. What is local flavor compared to others? Here one is, for example, if you see that either your flooring or ceiling, you find first of all sky, where Andhra has called Muggulu. We call it, they put Rangoli in North India. So that is the sequence. So we brought them in this year. So that gives you difference of feeling of local.
Similarly, we put local art. For example, we are putting the longest digital display, 120 meters by 6 meters, which give you completely local flavor, local dances, local things and all. Apart from that, we also the clear node building. We are putting that nicely, Nadaswam, which is famous of this. We also putting that Veena. All of you know the musical Veena, which is famous for local Bobuli. We are putting there. So these things will make you more of local touch with international standards. Yeah, so may I call it a mini museum of Andhra Pradesh? So I just want to ask, when is going to inaugurate these? No, we are expecting to inaugurate by any time, as Minister told already, between May and June. By July 1st, I'm sure we are going to operate regular commercial flights from this Bhogapur airport. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you.